Hi guys, welcome to On the Road with SV. This video is about the wireless Apple CarPlay that I bought recently from Utkarsh Gupta Biking Cares in Ghaziabad. I'm on my way back to Nepalganj from Rukumkot, and I have extensively utilized this device. मोबाइल फ़ोन्स को अब हम माउंट करना भूल जाते हैं. This is a fabulous device, but there are some drawbacks as well. I'll talk about the drawbacks in a bit. So let me just go back to the home screen. This is how the home screen looks. I'll record a better video, but this is how the home screen looks, wherein one selection goes to your Apple phone, one selection goes to your Android phone. I have opted for the dual camera, so dual camera option is here. It's okay, the quality isn't that great, could have been better, should have been better, and should be better. This device has become very popular among our riding community. It can be mounted on any of the bikes. It's universal. Plus, there is no need of cutting any wires. It gets directly attached to the battery, has a proper harness. It has also got TPMS. So I'll show you the TPMS as well. So see, अभी तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, या जितना भी दिखाई दे रहा होगा. 28 is my front tire, 31 is my rear tire. So pretty decent device. Google Maps आराम से चल जाता है. Gets paired by wireless. Your Bluetooth headphones will also work on your mobile phone. It gets attached to the wireless as well. So overall, very good product. Pricing की अगर बात करें, there are multiple companies. These are all from China, by the way. Multiple companies offer some package or some deals. If you are importing it from some other place, it might be cheaper. So it can come in the range of 10,000 to 14,000. There are many online websites as well. Instagram, you see, Instagram में इतने सारे पोस्ट आते हैं इस डिवाइस के बारे में. Now talking about the interface, it's not going to be as smooth as your mobile phone. It will take its time, and it's इतना भी कोई ड्रैग नहीं कि मतलब आप वेट करते हो भैया और चालू ही नहीं हो रहा, कुछ हैंग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा चलता है, सेटिस्फाइड. आप हमेशा मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे रखोगे, ये रखोगे, वहाँ उसका कैमरा ख़राब होगा वाइब्रेशन से, तो वो सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाती हैं ये डिवाइस लगाने से. अब इसका दूसरा ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि हम अपना मोबाइल फ़ोन्स, पहले तो वी यूज्ड टू माउंट अ मोबाइल फ़ोन्स एंड यूज्ड टू चार्ज, बट नाउ you need to have a tank bag. You need to have a tank bag to charge your mobile phone. You have to keep it on your tank bag, inside your tank bag, and connect the whatever charger that you guys have on your bike. Extremely sturdy. Right now it is 3 o'clock in the afternoon. You can increase the brightness levels. ये रहा brightness level, जितना increase करना है ये मैंने कम कर दिया. पता नहीं आपको पता चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, ये मैंने बढ़ा दी. अरे आ जाओ. ये मैंने बढ़ा दी, आराम से बढ़ गया. इसमें वॉल्यूम भी है, इसके पीछे एक स्पीकर भी है, जो कि मैंने इसको अभी बिकॉज बारिश वारिश का सीन था तो मैंने इसको टेप अप करके रखा हुआ है.
This device, I bought it from Gupta Viking Gas Utkarsh, comes with a 1-year warranty as well, just in case anything happens. In the box, you've got an extra cable and an extra mount for your camera, just in case अगर वो camera mount अगर टूट जाता है, so then you can use that as well. I did a journey of around 1800 kilometers with this particular device. I was satisfied. Now Google Map की तरह जैसे आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो, अपना Google Map हमेशा ऑन रहता है, ये ऐसा नहीं है. आपने इग्निशन ऑफ कर दे, डिवाइस भी ऑफ हो जाता है. And then when you switch it on and the device comes on, it will automatically pair your Apple CarPlay or your Android. It will take that 20 seconds and your Google Map will be back on. You don't have to keep on searching भैया सर्च करके फिर वापस उसको अलाइन करो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. एक बार आपने गूगल मैप लगा दिया है, वो आपके डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा. मैं अच्छा दिखाता हूँ आपको. अभी ये मेरा गूगल मैप लग गया. इसका इंटरफेस ऐसा है. ये सब मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो भी दिखाऊंगा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डिवाइस while I'm riding back to Nepalganj. You should buy it. It's really helpful. So here's the closer look of this entire screen. Ignition on. That's the logo. So ये आपका होम स्क्रीन है. इसमें दिस इज़ व्हाट द कैमरा इज़. ये कैमरा को सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली, अभी ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है मेरे एप्पल कारप्ले से. ये मैप आ गया है. टू गो बैक टू होम, ये एक छोटा सा एक बटन यहाँ पर है, टच स्क्रीन. ये 4 ऑप्शंस आ गए यहाँ पर. होम बटन में जाते हैं. सो होम बटन में आपको दिख रहा है कारप्ले, एंड्रॉयड, द पैनल, रीप्ले, settings and Bluetooth. These are the 6 options, and this bigger screen is basically for your dash cam. Go back to home menu. Once you have connected to your CarPlay via Bluetooth, it takes roughly about 5 seconds. ये लोगो इतना जल्दी आ गया. 5 seconds पहले लगता था, अब तो देखो यहाँ पे आ गया. Google Map, you can play your songs. I'm a huge fan of Coldplay. You can go to your dialed numbers as well. Recently played, library, all those things are available. Let's go back to our Google Map. Google Map, maybe whatever you want to use search, it will come. Let's go back to the home screen and look at the next option. Android Auto, मेरे पास Android Auto फ़ोन है नहीं, but Android का भी ये सेम चीज़ है. अब आते हैं पैनल पे. This is a very nice funky looking panel. और ये कंपस है. इट शोज़ यू द स्पीडोमीटर, फ्रंट टायर एंड बैक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. द TPMS is also on settings. You check out the tire pressure monitor. This gives you an entire detail of exactly what it is. PSI बार यूनिट है, टेम्परेचर हमारा सेल्सियस है. का टायर वार्निंग ऑन. टायर वार्निंग ऑन मतलब अगर आपका लो प्रेशर हो जाता है, लो में आपको कितना लो में आपको अलार्म चाहिए वो आप सेट कर सकते हो यहाँ पे. लो अलार्म और हाई अलार्म. हाई अगर होगा तो मैंने 40 में करके रखा है. सो वंस इट रीचेस 40 PSI दे विल बी अ मैसेज टायर प्रेशर हाई, टायर प्रेशर हाई. अगर लो होता है 23 पे तो शो मी टायर प्रेशर लो, टायर प्रेशर लो. और ये टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बताएगा. गोइंग बैक टू द सेटिंग्स, स्पीड यूनिट्स चेंज कर सकते हो, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हो, GPS इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज, टाइम सेटिंग, फ़ोन ऑडियो, हाउ मच डू यू वांट, ऑन और ऑन ऑफ चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी आप कर सकते हो.
की वॉल्यूम ज़रूरत नहीं है. वाईफाई स्विच फॉर्मेट SD कार्ड. SD कार्ड आपका जो है यहाँ पर लगता है इस जगह पे. Best is to actually use a higher quality and higher rating SD card to click better videos. If I show you the video quality, it's okayish. I won't say, even if it is quad full HD, still it's okay. It's not bad, but it could have been really better. I was talking about in the video. ड्यूल मोड अगर आपको जाना है, अगर आपको रेयर देखना है तो आपको रेयर ड्यूल मोड आपको इस वाले मोशन में आ जाएगा. पीछे आगे वाला यहाँ पर, पीछे वाला यहाँ पर. दिस इज़ माई फ्रंट कैमरा. अगेन इट स्विचेस ऑन, स्विच हो जाएगा. दिस इज़ माई फ्रंट कैमरा. आई फाइंड द फ्रंट कैमरा better than the rear camera, even though it's the same make. It will automatically start recording once you start your ignition and the device comes on. SD card अगर लगा हुआ, it will start automatically recording. Going back to home, Bluetooth connection, recording device. This is the brightness level. और ये डिवाइस का वॉल्यूम है. कार प्ले कितना जल्दी आ गया. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज़ द गूगल मैप्स. सो आई होप द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड must have given you enough amount of idea whether you want this unit or not. But my suggestion, people like us who love to travel, it's a must for all of us. Cheers, bye bye.